Hello everyone. In this video we will see factorial program in Java. So the definition I will read first. The factorial of any positive integer n, which is denoted by n factorial, that exclamation mark is read as factorial. It is a product of all positive integers which are less than or equal to that n. Okay. So the factorial of n is the product of all positive descending integers. So you can see here the formula says that let me go up again. The formula says that n factorial equal to n into n minus 1 factorial. So that is n factorial will be n into n minus 1 into n minus 2 and so on till 1, because factorial can't be defined for negative integers or negative values, तो वो 1 तक जाएगा और 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, क्योंकि नीचे हमने एक स्पेशल केस में डेफिनेशन में लिख के दे दिया है कि फैक्टोरियल फॉर नंबर 0 एंड 1 इज़ ऑलवेज 1. सो लेट अस सी एग्जांपल दैट 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. तो इट इज़ रिटर्न एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टिल 1 वी विल गो एंड इट इज़ 120. सो इट इज़ सो सिंपल. एंड 4 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल देख लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 24. So this is example of factorial, and for negative numbers factorial value doesn't exist. So and as I say that 0 और 1 का factorial हमेशा 1 होता है, ठीक है. So now let us look for the coding part. So let us code. So we are writing code in Java. So first of all we will import the scanner function, which will use for users to enter the value in the code. So we will import java.util.scanner, and then we will write our main function public static void main, and inside the bracket string it will be list and arguments. Then we will open the bracket and we will write our main code part here, means body of the code defines under main. So first of all हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे. तो here the scanner function will work. सो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर. तो हम लोग एक न्यू इनपुट यूज़र से लेने वाले हैं, इसीलिए हम लोग न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है. और नाउ वी विल रीड दैट व्हाट द यूज़र विल इनपुट. सो सिस्टम एंड वी विल टेक द सेम वेरिएबल दैट इज एस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिंट द स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सो व्हाट विल बी प्रॉम्प्ट फॉर द यूज़र कि आप इनपुट कैसे करोगे. So it is enter any number. So this will display on the output screen, and after displaying this the user will input some value. So it will read into num variable int num. हम लोग int से define कर रहे हैं क्योंकि we won't take the negative values or in point value. So float double ये सब use नहीं होगा. So int num sc dot next int. next int क्यों, क्योंकि उस नंबर को हम लोग आगे रीड करेंगे. सो यहाँ पे हमने उस इनपुट नंबर को स्टोर कर लिया अपने नम वेरिएबल में. सो नाउ वी विल सी द कंडीशन. इफ़ द एंटर्ड नंबर बाय यूज़र इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या सिनेरियो होगा. सो इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी विल कॉल ए रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड फैक्टोरियल. सो वी विल डिफाइन ए वेरिएबल दैट इज़ int फैक्टोरियल नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, और इसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन किया फाइंड फैक्टोरियल, एंड वो रीड क्या करेगा, जो यूज़र इनपुट करेगा नम को. ओके, एंड देन नाउ वी विल प्रिंट द आउटपुट स्टेटमेंट, मीन्स द फाइनल स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा फैक्टोरियल ढूंढने के बाद स्क्रीन पे, वो इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. So inside round bracket under the quotes we will write the factorial of entered number, और हम यहाँ पे उस नंबर को भी लिखेंगे तो प्लस n और num under the quotes again is, and we will call our newly defined variable that is factorial. So जो भी कैलकुलेट करके आएगा फैक्टोरियल वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे. अब ये कैलकुलेट कैसे करेगा, वी विल लुक नाउ बाय रिकर्सिव फंक्शन. सो यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं रहा तब एक क्या प्रिंट होगा. इफ़ यूजर्स एंटर्स ए नेगेटिव वैल्यू देन व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द यूज़र.
सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं system.out.println under the quotes the factorial not possible if user enters any negative number or the number which is not greater than equal to 0 then it will display factorial not possible. और हम लोग एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर और इंटीजर, प्लीज़ एंटर ए वैलिड input. So this was the if and else condition. Now we will look for the recursive part. हमने एक गलती की है क्योंकि आप देख सकते हो void, print, इन सब में एक रेड लाइन आ रहा है. अब वो मिस्टेक क्या है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ. तो आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए क्योंकि विदाउट डैट यू कांट रन द कोड. वो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जानबूझ के किया है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ. So recursive function to find factorial of a number. So we will again write if condition here. So if num equal to 0 then we will return 1 क्योंकि हमने देखा कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है. Else if num equal to 1 for this condition also we will return 1. Else अगर 1 0 नहीं रहा, उसके अलावा कोई नंबर रहा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल. कैसे करेंगे? नम इंटू फाइंड फैक्टोरियल. ये जो हमने रिकर्सिव फंक्शन ऊपर डिफाइन किया अब उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो नम माइनस 1 इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते जाएगा. सो जो एरर था वो अभी हमें यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज द एरर. या सो वी हैव नॉट डिफाइंड आवर फाइल का नाम ही नहीं लिखा हम लोग ने, क्लास. सो पब्लिक क्लास, आवर फाइल नेम इज़ फैक्टोरियल हियर. तो हमने पब्लिक क्लास फैक्टोरियल लिखा. तो जैसे ये स्टेटमेंट लिखे हमने, नीचे देखो रन डिबग का एक ऑप्शन आ गया कि ये कोड सक्सेसफुली रन हो सकता है. अब एक और एरर है इसमें, नीचे देखो आप, फाइंड फैक्टोरियल जो रिकर्सिव फंक्शन है हमने इसको कॉल नहीं किया क्योंकि मैंने अभी सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया है तो इसलिए यहाँ पे सब लाल रेड 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 दिख रहा है. तो हम लोग यहाँ पे भी पब्लिक रिकर्सिव फंक्शन को पहले कॉल करेंगे. सो ऊपर सब करेक्ट है. लेट अस गो डाउन. या हियर. सो वी विल कॉल रिकर्सिव फंक्शन हियर पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड फैक्टोरियल. वाई इंट? क्योंकि हम लोग नम जो यूज़र से ले रहे हैं वो इंट डेटा टाइप्स का था इसीलिए. एंड वी विल सी आई एम राइटिंग हियर इंट नम. So after writing this statement we will cut that curly brackets from up and we will write here after the int num function. So यहाँ पे bracket start होगा और नीचे end हो रहा है. Okay. See, you can see after doing this thing our that error went. And one more is spelling. Oh, I wrote the spelling incorrectly, static. So I will change that. So this is the code. Pause the video and note the code properly. And here it's 0. Note the code properly and let us compile to see our output. So here we go. After compiling, the output screen looks like this. Ki enter any number. So we will enter any number and it will read and stored in num variable. तो हमने enter any number. तो let's say C with 0. So अगर हमने 0 input किया, so the output came is the factorial of entered number 0 is 0. एक और input put करते हैं, let's say 5. तो factorial of 5 is 120. You can see how our code successfully executed. So enter any number. So let's say 10. तो 10 का factorial है 3628800. Enter one more number. You can try and attempt any kind of number. So enter any number. So here I entered -8 and you can see that factorial not possible. Please enter a valid input. So एक बार कोड कंपाइल हो गया तो आप अपने हिसाब से इनपुट दे के आउटपुट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. So I will do some more example. See examples. So 15 का ये रहा. It's a huge number. So let's say find the factorial of 3. It is 6. One more time I will compile and this time I will enter
119. So 19 ka, it's again a large number. So I will enter some number which will exceed the int limit. So let us find the factorial of one big number. Let's say 50, 59. So you can see here 59 factorial is 0. So comment why I got 0, क्योंकि factorial 59 का 0 नहीं हो सकता है. कमेंट करके बताओ ये 0 क्यों मिला. Comment why we got 59 factorial as 0.